Assalamu alaikum. Walaikum Assalam, sir. Walaikum Assalam, sir. Yes. Welcome to this class today. We are going to start Roland Barthes, a French theorist, philosopher, critic, and literary critic. Basically, we are going to read his essays, that is from Mythologies. It is a collection of essays published in 1957, and his work on semiotics is very interesting. Basically, semiotic and semiosis is a branch of linguistic where we know the structures of language, structures of certain things. So I'm going to define this and I'm going to discuss on this because in semiotics, science play important roles structure in the language. Now, basically, in the first place, uh, uh, Ferdinand de Saussure, a Swiss linguistic, he works on semiotic and structuralism as well, a founder of modern linguistic and semiology. Uh, Now here, I have given only the reference of Saussure because Saussure is a founder of semiology, and you see that his theory basically plays a vital role in structuralism of just in linguistic. But you see, Barth basically he has his own philosophy regarding semiosis and semiotics. Basically, his philosophy or his thinking and his mythologies are based on Saussure's theory. So therefore, I have mentioned this. So from mythologies is his topic today. Basically, there are two parts of the essay, the book he has written, Mythologies and Myth Today. Now, this is the introduction of this, and we are going to uh, read about it. But in the first place, we have to learn what Saussure said and what or you see that his science and how semiotic or semiosis play a vital role in linguistic. So first of all, we must know the concept of Saussure, and then we learn the concept, what the concept Barthes is promoting. Now here it is important as you know that what is semiotics? Basically, semiotic is a study of signs and symbols and their usage of and their use of interpretations. Usually, semiotics analysis studies the roles of signs and part they play on a social and cultural scale. Signs basically are the fundamental units of language because the sign uh, uh, because of sign as we know that you can say traffic signals basically because when we talk about science in the language, science basically the fundamental units of language, because when we talk about structuralism of language, there are certain small structures, and those basically small structures just connect themselves to the large structure. So it means that for the theme, for any bigger thing, for any philosophy, first of all, language and grammar basically play a vital role. As we know that through science or through signals or through science of traffic, we control the whole traffic system. So science basically, I'm saying that I mean to say
are the building blocks of language. So here, semiotic analysis studies the role of science and the part they play on the social and cultural scale. When we talk about any sign, now it signifies something. As there are three things: sign, signified, and signifier. As you know that because this basically concept has been given by Saussure. Now, as you know that there is a tree, and basically tree signifies something, and then there is a signifier. Now tree is a sign. Tree is a sign, and it signifies something. Now you can say that there is a signifier. Now we can say that suppose tree provides us oxygen. You see that there's a significance of this tree, and basically it also provides shade. When we take it to the meaning of environment, when we take it to the meaning of something else, when we take it the meaning of friendship, now we can say a friend is just like a cherry tree. Now it means that we are connecting it to the culture and social values. So it means that we are pinning signifier to it. Now it depends upon us. So basically sign, as we know that there are certain symbols we use. Dove is a symbol of peace. Olive branch is a symbol of peace. But you can say that there is a sign. So this sign basically connects that thing to the larger scale, at the larger scale, as peace is at the larger scale. This is abstract thing. In order to describe it, in order to explain it, we try to give the examples. So what is sign basically, and what is a signifier? A sign is the smallest unit of meaning. As we know that sign, signified, and signifier, they are very much related with each other. In order to create a defined sign, you need two pieces. अच्छा, साइन को बयान करने के लिए जो है आपको दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. द सिग्निफायर, any material or physical form of the sign, the object that exists. Now you see that the signifier, any material or physical form of sign. Now as we don't know that the tree is a physical form of something. Now, what is signified? A cultural or social concept that is signifies refers to what it means. Now, it means that suppose I am saying that tree provides shade. Now, I take it in my own meaning. Now, this is you can say that there, when we talk about any word, or when we talk about any signified thing, so we take it in two meanings. In the first sense that we say denotation of the dictionary meaning of that thing, and then connotation. Now it means that we take it to another meaning. It signified means cultural or social concept that the signifier refers to what it means. Now it depends upon you how you signify, how you pin importance to that signified. So it means that there are three things: sign, signifier, and signified. So you see that sign is the building block, the basic unit of language, and signifier basically is a physical form of something, physical form of sign. Object is there, basically object is there, and signified, we pin any meaning and value to that thing, we call it signified. So we go further. I would like to explain it in a further sense. The diagram above more example of Saussurian model named after Ferdinand de Saussure, a Swiss semiotician who helped create the model. Now, this Saussure has created this model. The tree represent, now this is further explanation of that. The tree represent the concept of what we think about when we hear the word tree, the signifier. Now, what we think, suppose we think
A tree provides oxygen. What we think we sit in the shade of tree. We sit under the tree. Okay, what we think a tree is basically stopping the environmental pollution. Now, what we think in the sense that tree provides shade. So therefore, a good friend is just like a shady tree. Now, it means that we connect the meaning to something else. We connect the meaning to something else. Now it means that this is the tree signifies is something. Now it means we take it to the social, political, and you see that abstract views when it signifies. The sound of the word tree and reading of the word in print brings out the mental image of actual tree. Now, this you see that when we talk about the mental image, now it means that this is the signifier. So line between signified and signified represent the link the mind triggers whenever the two are placed together. The arrows represent that constant interaction between concept, sound, and view. Now, it means that while looking at this diagram. Now you can say sign, signified, and signifier. Now these three things are interdependent on each other for the meaning. Now if there is a no sign, if there is a no sign, there is no signified, there is no meaning, and then there is no signifier as it. So for signification of a signified or signifier, sign must be there. As we know that this diagram can be replaced with another diagram. Uh, I have given you the example of traffic signs. Now this is basically, we can say, socialist model is when we talk about science, because science building block of the language. And he is called you see that the pioneer of structuralism when we talk about you see that linguistic. Now, what is difference? Now, we discuss, because we are discussing over here Ronald Barthes. Now, what is difference between uh, a socialist model and Barthes model? Now, basically, social is talking about language. Now, it means that signifier, signified, and sign is there. And you see that from left, you can say this is the socialist model of a sign. Now, sign is there, a signifier is there, or signified is there. Okay. But here from the left, you see, according to Barth, basically myth. Now, is sign is basically the second order signifier, the second order signifier. Now, what does it mean, the second order signifier? Now, first order signifier in the sign is there, signifier is there, and signified is there. But this is in denotative meaning of something. Now, if we talk about signified, now there is a meaning, there is a connotative meaning, and there is denotative meaning. But Barth basically stresses a lot about, stresses a lot on the connotative meaning of something. Now, how we manipulate the meaning. Now, suppose you see, when I have told you, when we talk about the shade of the tree and we compare it with the friendship, now it means that to some extent we distort the meaning, we manipulate the meaning. Now, Ronald Barthes is saying that when we manipulate it, when we take it something else, something abstract, and that will become, you see, that familiar. So this is called myth. Now it means that when we take the meaning of something in our own context, now he emphasizes on the connotative meaning of sign. Now connotative meaning in the sense that how we use it.
how just we define it. Now it is up to us. Now there is a denotative meaning of something, and then there is a connotative meaning of it. Denotative in the sense as uh, literal meaning or dictionary meaning, and connotative how we take it. So Barth basically emphasizes the fact that there is a great importance of connotative meaning. So therefore, you see that when he is talking about sign, signifier, and signified, basically he is talking about myth. Now, what is, as you know that what language is, but according to Saussure, now Saussure connect these signs, signifier, and signified with language. But Bach basically connects sign, signifier, and signified with myth. Now we are going to discuss what myth is. Now here from mythology. Now myth basically it is general. It's a general meaning of this myth, folklore, anonymous traditional story that explains a belief. Now, myth is connected with the folklore. जैसे जो है कोई फर्जी कहानी हो या कोई ट्रेडिशनल स्टोरी हो, हम लोग बोलते हैं ये जो है myth है basically. As you know, Roman mythology, Greek mythology, जैसे ट्रॉय की स्टोरी है, तो बेसिकली वो मिथ पे जो है वो बेस करती है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, और जो भी इनका जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है. या सर व्हेन यू जिसमें सच्चाई ना हो. yes, we can say that. Just you see that the story of Oedipus, King Oedipus, is based on myth, you can say. Also, you can take this in a general meaning, myth, folklore, anonymous, traditional story that explains a belief. Now, just you try to understand it. Now, according to Saussure, now the language has got sign, signifier, and signified. But according to Barth, now he's saying that basically a myth is created through sign, signifier, and signified. Now, you generally we talking about myth. Now, how we define, there's a dictionary meaning of myth. Just folklore, anonymous, traditional story explains a belief. Now, this is a general meaning. But what Barth says, he defines myth as a type of speech and a system of communication. It has meaning. आपने देखा होगा कि ये देव और परियों की हमें कहानी सुनाई जाती थी. बेसिकली देव और परियां जो है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग में आते हैं, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन वो क्यों बताई जाती थी? बिकॉज दे हैव गॉट द कम्युनिकेशन, दे हैव गॉट द कम्युनिकेशन. लेकिन उसके बाद आखिर में हमें ये बताया जाता था कि भाई अच्छा अच्छा अगर करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छा अगर करेंगे तो हमें रिवार्ड अच्छा मिलेगा. तो इसका मतलब ये है कि देव है तो वो बेसिकली, या जिन है तो वो बेसिकली इवल के सेंस में आता है, और जो गुड है तो वो बेसिकली हम लोग किसी हीरो को जो है, किसी अच्छे आदमी को वो डिपिक्ट करते थे. बेसिकली ये देव परियां कुछ भी नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन मिथ. बट बार्थ इज सेइंग दैट Barth is saying that it has got great importance because it communicates. It is based on communication. Now, when we communicate, when we tell a story, when we communicate, now it has got certain meaning and it is a speech. तो बेसिकली जो ये बात ये बताने की कोशिश कर रहा है कि myth has got great importance. We create myth, we manipulate certain things. जैसे वो signified हम लोग किसी चीज को करते हैं तो अपने सेंस में लेते हैं. चलें ठीक है, ट्री को हमने कहा कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, तो जाहिर है बिल्कुल ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, उसकी एक फ्रूटफुल एक्टिविटी है. ट्री जो है बिल्कुल एक शेड प्रोवाइड करती है, हम लोग शेड लेते हैं. लेकिन हम ट्री को व्हेन वी कनेक्टेड टू द मीनिंग, जैसे हम चाह रहे हैं कि जो है वो ट्री को उस सेंस में ले जाएं, हम लोग जैसे चाह रहे हैं. हम लोग ट्री को फ्रेंड के साथ कंपेयर किया कि हमारा फ्रेंड जो है वो शेडी ट्री की मानद होता है जो हमें शेड प्रोवाइड करता है. बेसिकली Barth is saying that this is myth
वी हैव क्रिएटेड इट, हमने इसको जन्म दिया है, हमने इसको क्रिएट किया है। तो अपनी मीनिंग को जो है वो बेसिकली बताने के लिए। नाउ देयर इज अनदर स्कॉलर Levi Strauss, perception of myth include every symbol which conveys meaning, be it spoke or written text, image or design. अच्छा, डिफरेंट लोगों ने उसको लिया है, जैसे लिवाई स्ट्रॉस कहते हैं कि बेसिकली मिथ क्या है, इज अ सिंबल, text, it is in a spoken form, it is in written form or image or design. जैसे मैंने आपको बताया, dove basically is a symbol of peace. Now dove को जो हमने as a symbol of peace लिया है, basically बात कह रहे हैं कि this is basically myth, we have created it, कि हमने उसको जो है जन्म दिया, हमने उसको क्रिएट किया। It also involves, now you see that the further, it also involves a sign, and these signs are used to communicate a special type of message. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, देव जो है बेसिकली वो क्या है, इवल स्पिरिट है, ठीक है, जिसको सिंधी में हम लोग कहते हैं डायन। डायन बेसिकली हम लोग, जो औरत जो है वो खराब होती है, उसका किरदार अच्छा नहीं होता, हम लोग बोलते हैं तू डायन डायन। बेसिकली डायन जो है, जो उस सेंस में हम लोग लेते हैं कि दिस इज बेसिकली, हम लोग कनेक्ट करते हैं कि ये ईवल औरत है, हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं डेविल के साथ, सैटन के साथ। बेसिकली दिस इज मिथ, क्योंकि औरत जो है वो कभी डायन नहीं बन सकती, डायन होती नहीं है, लेकिन हम लोग उसको बेसिकली कनेक्ट करते हैं, दिस इज मिथ। सो इट आल्सो इन्वॉल्व अ साइन, एंड दीज साइंस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट स्पेशल टाइप ऑफ मैसेज। हम लोग खराब औरत को जो है डिपिक्ट करना चाहते हैं इवल के साथ, डेविल के साथ, तो वी बेसिकली convey a message, and that message basically becomes a belief of people. अच्छा, contemporary social value to create modern myth. अच्छा, मॉडर्न मिथ को क्रिएट करने के लिए अब आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली जो है, देखें, सर्फ और सोप्स की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हैं, ठीक है, पिज्जा और फिर खाने की चीजें की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हैं। हम लोग सर्फ को बोलते हैं कि भाई ये क्या है, एक्स्ट्रा है। बेसिकली देयर इज नो एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं होता। हम लोग साबुन को बोलते हैं कि भाई ये सुपर है, सुपर जो है, जैसे सर्फ को बोलते हैं सुपर है, या हम लोग बोलते हैं सुपर पिज्जा। बेसिकली देयर इज नथिंग एज सच सुपर, सुपर कोई चीज ही नहीं हो सकती, और एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी नहीं होता बेसिकली। एंड ये मैनिपुलेट किया गया है ताकि लोगों की जो साइकी है या लोगों के माइंड को जो है वो कंट्रोल करना होता है, और बहुत सारे साइंस जो है वो वहां पे ऐड किए गए हैं एडवर्टिजमेंट में, और लोगों को बेसिकली उनके मैनिपुलेशन होती है। तो this is now Barth studies the semiotics from myth creation point of view. जो सॉशर जो है वो बता रहा है, पाइनियर ऑफ सिम्योटिक है, तो वो बेसिकली बता रहा है साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड को लैंग्वेज के सेंस में। और ये जो है बेसिकली वो कहता है कि नहीं, लैंग्वेज तो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस होगी, लेकिन सेकेंड ऑर्डर सिग्निफिकेंस उसकी होगी मिथ के लिहाज से, कि साइन और जो सिग्निफाइड है या सिग्निफायर है वो बेसिकली मिथ को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो सॉशर बेसिकली कहता है कि ये साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है वो लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिएट करने के लिए जो है बहुत अहम जो है वो किरदार अदा करता है, ठीक है। और ये कहता है नहीं, ये जो है साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड जो है मिथ को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। नाउ हाउ ही इज गिविंग एग्जांपल, आई एम सेइंग दैट देयर आर टू पार्ट्स, क्योंकि ये एसेस थे डिफरेंट उसने लिखे थे। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस, मिथोलॉजीज एंड मिथ टुडे। पहला जो पार्ट है इसका वो मिथोलॉजीज है, और दूसरा जो पार्ट है इसका मिथ है ना। उसके बाद फर्दर वो कैसे एक्सप्लेन करता है इस चीज को। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स गिवन बाय बार्ट्स। Now he's saying that French red wine is considered
freshening and life giving in cold weather. अच्छा, फ्रेंच वाइन जो है एक ब्लड की तरह है, तो उसको कैसे जो है वो उसमें जो है मिथ को ऐड किया गया है। बेसिकली उसमें मिथ को ऐड ये किया गया है कि ये फ्रेशनेस है इसके अंदर और लाइफ गिविंग है कोल्ड वेदर में। और दूसरा जो है इट इज सोशल इक्वलाइजर। नाउ सोशल इक्वलाइजर इन द सेंस दैट the rich people and poor just utilize this red wine, have it at the same time. तो ये सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए भी नहीं है, और फिर ये सोशल इक्वलाइजर है। हम लोग जब इसको सोशल इक्वलाइजर कहेंगे या इसको फ्रेशनिंग के सेंस में लेंगे, लाइफ गिविंग के सेंस में लेंगे, तो बेसिकली वी आर मैनिपुलेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो उसको हम लोग जो है एडवर्टाइजमेंट के सेंस में ले रहे हैं ताकि उसको जो है हम लोग बहुत ज्यादा उस पर पैसे कमा सकें। नाउ इट इज सोशल इक्वलाइजर एंड ब्लड लाइट, cool and sparkling in warm weather. Now we say that this red wine is good in cold weather, at the same time warm weather. But what happens? We are giving little attention to its harmful effects. हम लोग उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो नहीं बताते। वाई, क्यों नहीं बताते हम लोग उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को? बेसिकली हम चीजों को मैनिपुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव आवर पर्पस। और पर्पस क्या अचीव करना है? टू टू अर्न लॉट ऑफ मनी। अगर हम लोग बताएं कि इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, द पीपल विल नॉट ड्रिंक, द पीपल विल नॉट हैव द शैंपेन। हम लोग जो है, तो इसको बेसिकली जैसे आपने अभी देखा कि प्रेजेंट कैसे किया गया है, वाइन की बोतल पड़ी हुई है और ग्लासेस पड़े हुए हैं, आप उसके कलर को देखें, और साथ में जो है अंगूर का जो है वो रखा गया है, जो है ग्रेप रखे गए हैं जो है वो, ठीक है। आप इसको अगर देख लें तो बेसिकली व्हाट इज दिस फॉर? Now this is for the attraction of to the people, कि अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए जो है वो ये सब कुछ रखा जाए तो लोगों को अच्छा लगे, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पिएं, और उसको जो है उन्होंने मैनिपुलेट करके आप समझे कि सोसाइटी के अंदर उसको प्रमोट करना था। Now Barth is saying about wrestling also. The second example is of wrestling. Instead of focusing who will win, it reflects society's concept of good and evil, suffering, defeat and justice. आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो है उसको उसको बहुत जो है exaggerated way में, now they present it in exaggerated way, एग्जेजरेशन में पेश किया जाता है। ज्यादातर लोगों का फोकस इतना नहीं होता है कि कौन जीतेगा, कौन जो है वो, इस पे कम इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जो है आपने देखा होगा, यू सी दैट वहां पे चीटिंग होती है, वहां पे जो है वो एक दूसरे को डिसीव किया जाता है, और जिन चीजों की प्रोहिबिशन है कि वो यूज नहीं करेंगे वो यूज किए जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है आप ऐसे समझेंगे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल। कुछ रेसलर्स जो है बहुत अच्छे होते हैं और फिर जो है उनको लाइक किया जाता है, और कुछ जो है बहुत ज्यादा इवल माइंडेड होते हैं, लेकिन ये है कि लोग उनको भी लाइक करते हैं। तो रेसलर्स बेसिकली डिस्क्राइब द एग्जेजरेटेड स्टीरियोटाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ट्रेटर ईटीसी जो भी है। लेकिन जो कुछ दिखाया जाता है, whatever is being shown to the people, but it is not, ये नहीं होता जैसे लोगों को शो किया जाता है। तो we can say things are not how or what they seem। चीजें इस तरह जो है जैसे नजर आती हैं वो बेसिकली नहीं होती। ये बार्ट कह रहे हैं कि दिस इज बेसिकली मिथ। This is connected with because there is no fighting as such, there is no concept of winning and you see that losing as such, but we relate it with the society, we relate it with the goodness and evil. So therefore you see that wrestling basically is an exaggerated view of जो society के अंदर जो है suffering का concept है, defeat का concept है, justice का concept है, उसको मैनिपुलेट करके जो है वो। The audience also look them as a society's idea of justice. ऑडियंस भी उस सेंस में देख रहे होते हैं कि कोई कौन अच्छा है कौन बुरा है,
और किस तरह जो है वो उनके सफरिंग्स को जो है वो इंजॉय करते हैं। बेसिकली दीज टू एग्जाम्पल्स आर इन द सेंस दैट जैसा मिथिकल जो कॉन्सेप्ट है, फर्दर मैं इसको जो है एक्सप्लेन करूंगा तो जस्ट यू विल अंडरस्टैंड। Now the second part of this essay, the second part of this myth today. Now, Barth is saying that myth hides nothing. हालांकि myth जो है, it is distorted view of something. It is manipulative. It is false. It is fake. But it is still there to communicate certain thing. So myth hides nothing. So everything is told by myth. लेकिन myth सब कुछ बता देता है, लेकिन उसके बावजूद हमें पता होता है कि ये सही नहीं है. It naturalizes the particular view, world's particular view. अच्छा, myth जो है basically when it becomes familiar, जो है ये एक फेमिलियर चीज हो जाती है, तो उसके बाद जो है लोग उसको बार बार दोहराते हैं और एक रिकॉग्नाइज्ड चीज हो जाती है जो है. तो एवरी कल्चर, एवरी सोसाइटी, एवरी कम्युनिटी हैज देयर ओन मिथ. लोगों के पास जो है वो अपना ही जो है वो मिथ होता है, और वो उस मिथ को जो है वो कम्युनिकेट करते रहते हैं, और फिर जो है वो किस्से कहानियां जो है वो बता रहे होते हैं. मिथ मेक्स द पीपल टू बिलीव. जी, एक दिन जो है किसी स्टूडेंट ने मुझे जस्ट बताया था कि जो है वो किसी उसके फ्रेंड की जो है वो मंगनी वगैरह टूट गई, तो उन्होंने कहा कि उसको फिर कहा गया है कि भाई जो है वो आप ऐसे समझें कि उसकी तलाक हो गई है. बेसिकली व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज, ये बेसिकली मिथ है. उसको मैनिपुलेट किया गया है, उसको जोड़ दिया गया है, और ये दिस इज अ फेक थिंग. तो ब्लेम गेम के लिए जो है, आप एलिगेशन करने के लिए, और कुछ भी नहीं है. अच्छा, वो उसकी जो है सपोज मंगनी है, टूट गई है, हो सकता है कि लड़की ने इनकार किया हो सकता है कि अगले वालों ने नहीं समझा कि हम लोग इनके साथ नहीं चल सकते. बेसिकली दिस इज अ फैक्ट कि वो फ्यूचर में जो है वो चीज चल नहीं सकती, तो उसको जो है वो सेपरेशन में जो है वो लिया गया है. एंड अच्छा हुआ है, दिस इज अ गुड थिंग. तो उस जो है वो जो चीज चल नहीं सकती, तो उसको हम लोग क्यों चलाएं. लेकिन जो है वो औरत को या उस लड़की को बेसिकली इलेज करने के लिए, एलिगेशन लगाने के लिए हम लोग उसको मैनिपुलेशन करते हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं. बेसिकली ये चीज जहां पे हुई है, जिस कम्युनिटी के अंदर ये हुई है, जिस कल्चर के अंदर हुई है, वहां पे जो है इस किस्म के खतरनाक जो है वो चीजें होती हैं, और इसको हम लोग मिथ बोलते हैं. और लेकिन यकीन लोग उस पे करते हैं. पीपल आर टू बिलीव दिस. मिथ हैज इंपेरेटिव बटन होल्डिंग करेक्टर. नाउ बेसिकली यू सी दैट बटन होल्डिंग करेक्टर है, और जो है लोग बार बार उसको क्रिएट करते हैं, और बटन दबता है, और फिर उसके बाद जो है लोग उसको मशहूर कर देते हैं, लोग उसको फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है लोग किस्से कहानियों की तरह उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. मिथ रिमूव्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो मिथ बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक बिलीफ है, और जो है वो लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. नाउ व्हाट इज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मिथ. हम मिथ में क्यों यकीन रखते हैं? व्हाई डू वी बिलीव इन मिथ? Because it motivates us, it inspires us. Now, it is not based on reality. It is distorted view. It is distorted view, and it is manipulative view. आपने देखा होगा कि जो है जैसे वो हम लोग बोलते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी. कंस्पिरेसी थ्योरी भी ये होता है, अच्छा मलाला पे अटैक हुआ, मलाला जख्मी हो गई, और उसके बाद जो है मलाला को जो है वो भेज दिया बाहर, जो है उसका ऑपरेशन हुआ, जो भी सिस्टम हुआ. लेकिन आपने देखा होगा कि लॉट ऑफ पीपल, मेनी पीपल, दे थिंक दैट इट इज अ डिस्टॉर्टेड स्टोरी, कि ये जो है मलाला बेसिकली जो है वो फॉरेन एजेंट है, मलाला जो है वो एक डिस्टॉर्टेड चीज है, और मलाला के साथ इस तरह नहीं हुआ जैसे बयान किया गया है.
ना उसके बाद उसको जो है फैलाने की कोशिश की गई, उसको स्प्रेड करने की कोशिश की गई। अब सच क्या है जो है वो ठीक है, हकीकत क्या है, सच क्या है ना, वो तो है, लेकिन जो है हम लोग वो सच, उस सच पे जो है बिलीव करना चाहते हैं जो हमने क्रिएट की है और हम उसको जनरेट करने की कोशिश की। सो इट मीन्स दैट वी आर ट्राइंग टू बिलीव इन अ ट्रुथ दैट वी आर ट्राइंग टू generate it, we are trying to believe it. Now this is another example. Black soldier salutes French flag. Now what it you see that according to Barthes, what it shows: African child in uniform saluting the flag of France. Now first denotation, child basically saluting the flag. Sorry, this is saluting. ये उसकी जो है मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है उसकी, कि बच्चा जो है, ब्लैक अफ्रीकन बच्चा जो है वो सल्यूट कर रहा है फ्रेंच फ्लैग को. Now this is a denotation. Now second level of significance, child hails from the great empire. Now this